Uh, Hello, I'm Jordi van de Kerkhoven and I'm BVA judge since this year. And it's now the first time I come to judge to Portugal. It was a very nice show and we will explain something about judging birds, rosicolis first. Jolly, yesterday I asked some questions about the birds, their features and their standards, how you are judging the birds. Yes. So you told me yesterday about the features and the things. So can you show the picture again, the participants of the show, and you teach me how you give them numbers. Okay. Yeah. Perfect. This is a very good bird. Yes, really. Yes. It's an orange face rosicolis. Okay. It's an amazing bird because if we start to look at the color, Okay. the body color is nice, clear, it's shiny, and also the mask is very intense by color. If you look also to the Different mask. yes, you see the nice line. Okay. It's one line who flows from. Is it continue from the head Yes. to the front? Yeah. Yes, that's Okay. clear. So that's often a mistake in the birds. They collaborate. Yes. Yeah. like They mix the mark. Yes. So that is it's necessary also. And Okay. if you see also in the mask below, often it's a mistake when the mask goes inside on both sides. It's also a big mistake. So you need to select the mask is above in one line, also below in one line, and if possible, so big as possible in the below of the mask. Okay. Okay. So first of all, we look for the basic thing is the bird's color. Yes. So first of all, we give the marks, the points to the color. Yes. Yeah. The So how complete much color. point you give this bird? In this bird, I would give a 33 on a 33. Yeah. against Okay. 35 points. Against 35. Yes. तो जॉडी का कहना ये है कि जब बर्ड को जज करता हूँ तो सबसे पहले उसका कलर जो उसकी रोटेशन के मुताबिक है, लाइक ग्रीन है, तो ग्रीन बर्ड को आप देखें कि उसका कलर ग्रीन्स में कैसा होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. लवबर्ड कंपेडियम में भी मौजूद हैं और आप पूछ भी सकते हैं सीनियर से और सर्च भी कर सकते हैं. तो जॉडी ने जो फर्स्ट डिसीजन लिया है वो लिया है कि कलर पे 35 नंबर्स टोटल हैं, जिसमें से उन्होंने 33 यू गिव 33 नंबर्स टू दिस बर्ड. या Yes. ओके. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज हिज साइज. या That's the type and design of द the टाइप bird. एंड डिजाइन ऑफ द बर्ड. Yes. I really like the design of this bird because also in the neck it's one straight line, his model, Okay. like this, because some birds got also No lack of time. It's Yes. a straight line. Yes, that's Okay. true. And also the head is to me very important. It needs to be good in size like this, and the beak needs to be also compact in the head of the bird. Okay. Some birds got a small and long beak, and to me it's a big mistake. And we need to select on it because there are mutations like Ino who've got really small, long beaks, and it's not good in my eyes. And also, to me, in rosicoli, you've got the back above and the back below. When the feathers are over the beak below, it's good to me if you don't see the beak anymore in the lowest beak, you know. Okay. Yes. Okay. जॉडी कह रहे हैं कि जो सेकंड चीज़ मैं बर्ड में देखता हूँ या जब शो में जजिंग कर रहा होता हूँ तो वो मैं इसके साइज़ और टाइप को देखता हूँ कि ये बर्ड मतलब एक कंप्लीट आपको एक फॉर्मेट नज़र आना चाहिए कि बर्ड जो है वो आप देख रहे हैं तो वो अपनी बीक से हेड से स्टार्ट होकर टेल तक जो है वो एक फॉर्मेट में बर्ड होना चाहिए. तो उसके लिए ज़रूरी है कि पीछे से जो मतलब बर्ड की स्ट्रेट लाइन आ रही है वो कंप्लीट हो हेड से लेके टेल तक. और उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो इनके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बर्ड का हेड है, कि वो हेड उसकी बॉडी के प्रोपोर्शन के मुताबिक बिल्कुल ठीक हो. जैसी बॉडी है उसमें वो हेड अच्छा लग रहा हो उसके मुताबिक वो बड़ा हो. जो बीक है शुड बी सेंट्रलाइज्ड हो और वो इतनी बड़ी ना हो कि वो आपको लग रहा हो कि उसके बैली तक या उसके नेक तक नीचे तक आ रही है. So the third thing you see in is the size, yeah? Yes.
This is also a nice sized bird. It's got a good body, because there are birds with good body, and the feathers are also close to the body. So to me, it's conditional. These feathers are formed with the body, Yes. yeah? Yes. Okay. So and the size, you see it like this. It's a great head, great neck. The body is also very nice. So to me, it's almost a perfect bird in this case. Yesterday BBA शो पे हमने काफ़ी बर्ड्स को डिस्कस किया. जॉडी से मैंने बड़ा पूछा कि किस तरह इन्होंने डिसीजंस लिए हैं. इन्होंने मुझे काफ़ी समझाया वहाँ पे कि इस तरीके से जो है मैंने इसको पॉइंट्स दिए हैं और इसके पॉइंट्स क्या आते हैं. जब दो बर्ड्स बहुत क्लोज हो गए हैं तो उसका बताया कि उसको कैसे कंपेयर किया इन्होंने. तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पाकिस्तान में भी शोज़ आ रहे हैं तो आपको थोड़ा जो है वो उसका नॉलेज मिले. तो जो तीसरी चीज़ इन्होंने बताई वो साइज़ भी ही थी. जो साइज़ का मैं आपको बता चुका हूँ कि साइज़ आप खुद जब बर्ड को देखते हैं ना तो आपको भी पता लग जाता है कि यार बर्ड जो है ना एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में है. ठीक है, खूबसूरत बर्ड है, वो आई कैचिंग होता ही होता है. तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपने अकॉर्डिंग टू शो देखनी है. जैसे जब साइज़ की बात कर रहे हैं तो उसमें ये बड़ी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है. जो ये शोल्डर्स हैं, जो फीदर्स हैं, शुड बी फर्म, यानी बॉडी के बिल्कुल साथ होने चाहिए. ये नहीं कि शोल्डर्स इस तरह हैं लाइक दिस विद द बॉडी. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. एंड द फोर्थ वन इज नेल्स एंड फीट. Yes, here you see the nails are nice, Black. dark, black, Yeah. and that's important. And they all need to be equal. Okay. So this is perfect condition bird, and also when the bird is in perfect condition, the nails will be nice black in that case. But it's always selection because if you got birds with one nail, it's very dominant with the youngs. So if there are white nails, it's better to remove the bird out of your collection also. Okay. So you said the male or the bird are missing with nails should be got separated with the other birds. Not missing nails, but when the nails is not black, but for example white or light gray. In that case, yes, when the nails are mixed in color, it's not good because this is very dominant for the youngs. They will create in For the future. breeding, yeah? Yes. Okay. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जॉडी ने बताई है कि जब शोज़ के लिए भी आपने नेल्स और फीट्स को देखना है कि वो प्रॉपर अपनी मोटेशन के मुताबिक. जिस तरह अगर ग्रीन बर्ड है तो उसके प्रॉपर बर्ड जो है नेल्स हैं वो इक्वल हैं, एक ही कलर के हैं, डार्क कलर्स में हैं. ये तो देखना ही देखना है. उसके बाद उनका ब्रीडिंग के लिए आप देखें कि अगर कोई बर्ड या आपके बर्ड रूम में या आपकी कलेक्शन में कोई ऐसा बर्ड आया है जो जिसके नेल मिक्स कलर में है तो वो बहुत डोमिनेटिंग है, तो उसको सेपरेट करते हैं, उसको अलहदा करते हैं, उससे ब्रीड ना करवाएं क्योंकि ये चीज़ फिर आगे आपकी लाइन में चल पड़ती है. दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग यू टेल अस. एंड द नेक्स्ट feathers conditions. Yes, the condition of the feather is here very nice. Yeah. You see also that the feathers are shining. Maybe the one of the only mistakes on these birds are the feathers are here and the flight becoming a little too low. You see like this? Yes. Yes, this should be maybe a little shorter in that case, but I think this is one of the only mistakes this bird got. In that So how many points you give this on this mistake? I would lower it with 1 point in that case. Okay. So I would give it this 8. Okay. The nails and feet. I would. Okay, Yes. 10 by 10. Okay. फीदर्स की कंडीशंस अच्छी होनी बहुत ज़रूरी हैं. टेल के फीदर्स पूरे हों, आपके फ्लाइट फीदर्स पूरे हों, एंड द विंग्स आर नॉट बी क्रॉस्ड. Yes, also very necessary. यस. जो है शोल्डर्स क्रॉस ना, विंग्स क्रॉस ना कर रहे हैं. उसके बाद जब शोल्डर्स यहाँ बॉडी से आ रहे होते हैं ना तो कुछ फीदर्स बॉडी से नीचे आपके उसके नीचे वाले हिस्से पे शो हो रहे होते हैं बॉडी पे. तो जॉडी ये कह रहे हैं कि वो मस्ट बी इन अ गुड सीक्वेंस. लाइक दिस, मतलब वो एक सीक्वेंस में फीदर्स आ रहे हैं, उनमें से कुछ फीदर्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए. तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के साथ मैं वो लगा के आपको एक्सप्लेन कर दूँ ना कि ये 1-2 फीदर्स जो नीचे आपको मतलब लग रहे हैं कि ये एक लाइन आ रही है तो 2-3 आपको इस तरह नीचे लटकते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके जो पॉइंट्स हैं वो कम होंगे. एंड द लास्ट वन इज The general condition. The general condition, Yes. yeah. Again, like you see the bird, this is on his back. The feathers are
lighting up almost. So it's a great condition. Also the bird shows him very nice in this case. It's showing his in the cage and not go on the ground. So it's perfect trained bird and the condition is also perfect. So in that case, this bird I would give 10 on general condition also. जो आप ट्रेनिंग करवाते हैं ठीक है और जो बर्ड को ट्रेन करते हैं शो बॉक्स में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जॉर्डी साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये बर्ड अपने मतलब पर्च को मिस करता है नहीं स्टिक को छोड़ता नीचे रहता ऊपर जाता डरता तो वो शो कर रहा है कि इस बर्ड को कभी शो बॉक्स में डाला ही नहीं गया इसको ट्रेनिंग ही नहीं करवाई गई तो उसके भी उस कंडीशन के और उसके एक जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है अपने आप को उसके भी नंबर्स हैं तो वो नंबर भी ये कट करेंगे यहाँ पे। तो एक सबसे पहले बर्ड की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो उसको आप थोड़ी सी हिम्मत करें और ट्रेन करें क्योंकि जो ट्रेन बर्ड है वही अच्छा परफॉर्म करेगा और वही अपने आप को जो है वो अच्छा डिस्प्ले करेगा। Show them like they yes, need yes, to- need to yes. be. वो कह रहे हैं वो नीचे बैठा रहेगा और अपने आप को शो नहीं करेगा। तो इनसे काफ़ी डिस्कशंस हुई कल शो पे भी यहाँ पे भी ये पूरा एक जो है एक जजमेंट जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक पॉइंटिंग सिस्टम के मुताबिक बात हुई। तो शो खेलें शोज़ में आएँ देखें आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं चीज़ों को सीखें और इसी से हॉबी प्रमोट होगी और लवबर्ड पाकिस्तान में प्रमोट होगा। थैंक यू वेरी